I heartily welcome to all of you on the digital platform of Aksar Education. In this video, we are going to discuss method of factorization. Method of factorization by splitting the middle term. So how to factorize by splitting the middle term? So for that, let us now consider the question number 1. Here we are given x square plus 15x plus 26. By first sight, it will be look like as perfect square trinomial, but this given polynomial is not perfect square trinomial because here last term is not perfect square and middle term does not follow the form of plus or minus 2 into square root of first term into square root of last term. So this is not perfect square trinomial, it is only trinomial. So this type of polynomial can be easily factorized by splitting the middle term. The name of method is factorization by splitting of middle term. So what is the meaning of splitting the middle term? Splitting the middle term means you have to divide the middle term for the further factorization of this given polynomial. So here this one is first term, this term is last term, and this term is known as middle term. So for the factorization of this type of polynomial, we have to divide this middle term so that it will be further factorizable. So how it can be factorized? So for that, you have to consider the coefficient of this x square. Here coefficient of x square is nothing but the 1. So you have to multiply this 1 with this 26. So what is the multiplication of this last term with the coefficient of this x square? It's a 26 ones are 26. So here our hint is factorize 26. Then you have to consider this sign of the last term. Sign is plus, so you have to consider this sum, addition. So 26 ones are 26. So here you have to think like this: factors of 26, factors of 26 whose sign is plus. So whose addition is 15. You have to find the two factors of 26 whose addition is this number. This number is nothing but the coefficient of this middle term. And you have to split this middle term. For the splitting of this middle term, you have to split the coefficient of this middle term. And the coefficient of this middle term is 15. Plus 15 is there. So for the splitting of this middle term, what we are doing? We are multiplying this constant term with the coefficient of this x square, which is nothing but the 1. So 26 ones are 26. Therefore, you have considered 26. Then you have to think like this: factors of 26 whose, now the sign of last term is plus sign. So factors of 26 whose addition is the coefficient of this middle term, which is 15. So बताओ 26 के ऐसे कौन से फैक्टर है जिसका एडिशन 15 आए? So here we can write it's a 13 2s are 26. And two factors of 26 are 13 and 2. 13 2s are 26 is there, and here our middle term can be split as the factors of this 26, that is nothing but the 13 plus 2. So here 15x is there, so we can split this 15x as a 13x plus 2x. So this 15x is now divided into two terms, 13x plus 2x. Clear students? This is known as splitting of middle term. So ऐसा करने से क्या होगा देखो. So now what is the factorization? है ना, ये सब आपको डायरेक्ट लिखना नहीं है, लेकिन आपको ऐसे करना है. So it's x square. So our next step is x square plus splitting this middle of 15x as a 13x plus 2x. You can write 2x plus 13x or 13x plus 2x plus 26. और ये वाला कैलकुलेशन आपको रफ में या फिर आपके जो सम्स है उसके बाजू में आपको करना है. डन. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सम, ये आपको सम में रिप्रेजेंट नहीं करना है. तो हो गया फैक्टर्स ऑफ 26 whose एडिशन इज 15. सो 13 2s are 26 प्लस 13 प्लस 2 इक्वल टू प्लस 15. नाउ consider this one as a first group, this one as a second group, and now we know the factorization by taking common. So from the first group x square plus 13x, we can find x as a common. So x is common, remaining terms are x plus 13, x plus 13 plus, now from the second group 2x plus 26,
we can take 2 as a common and remaining terms are x plus 13 है ना। यहाँ पर जो ब्रैकेट है वही यहाँ पर आना चाहिए, और एक बार एक्सपांसन करके वेरीफाई कर लो। 2x प्लस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 13x डन। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट स्टेप वी कैन टेक this x plus 13 as a common, so x plus 13 is common, x plus 13 is common and remaining two terms are x plus 2, x plus 2. So this is factorization of this given polynomial by splitting the middle term. Clear students? कैसे करना है ना। हमारे पास 12 सम है, तो देखो हर एक में कैसे करना है, सेम लॉजिक से आपको आगे बढ़ना है। नाउ check this question number 2. It's a x square plus 9x plus 20 है ना। पहली साइड में देखने से वो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल दिखेगा, लेकिन जैसे आपकी नज़र ये 20 पर जाएगी आपको तरह से वो लाइट होगी कि ये 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से ही होगा। सो हियर मिडल टर्म इज 9x, कोफिशिएंट इज 9। इन शॉर्ट यू हैव टू स्प्लिट दिस 9। स्प्लिटिंग द 9 मीन्स 9 को आपको डिवाइड करना है, दो टुकड़ों में डिवाइड करना है। कैसे करना है? सो फॉर दैट यू हैव टू कंसीडर दिस 20 एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर 1। 21 से 20, तो आपको 20 को उठाना है ना, तो उठा लिया। नाउ यू हैव टू थिंक लाइक दिस, फैक्टर्स ऑफ 20 और उसके बाद लास्ट टर्म की जो साइन है ना वो चेक करना है, कौन सी है, प्लस साइन, तो एडिशन करना है। सो फैक्टर्स ऑफ 20 whose एडिशन इज 9 है ना। फैक्टर्स ऑफ 20 whose एडिशन इज 9, तो सोचो 20 के ऐसे कौन से दो फैक्टर है जिसका एडिशन 9 होगा, और 9 भी कौन सा 9, प्लस वाला 9। आया कुछ दिमाग में? 5 4 जा 20 और 9 को रिप्लेस करना है तो करेंगे 5x प्लस 4x है, जो भी फैक्टर आएंगे ना उसका एडिशन करना है तो 9x मिलेगा। सो यहाँ पर प्लस 9x लाना है, तो ये प्लस 5x प्लस 4x तो 9x आएगा। डन, तो हो गया हमारा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। 9x को स्प्लिट करेंगे 5x प्लस 4x है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि 5x पहले लिखे या 4x पहले लिखे, आपको जो चाहे मर्जी आए वो आप पहले लिख सकते हो। सो हियर इट्स x स्क्वायर प्लस 5x plus 4x plus 20. Splitting the middle term. Here we have split this 9x into 4x plus 5x. Now for the further factorization, consider the group of first two terms and the pair of last two terms. So here from the first two terms we can take x as a common. So x is common. Remaining terms are x plus 5. Now here 4x plus 20, we can take 4 as a common, remaining terms are 4 5 are 20, so x plus 5. Similar to the previous term, here x plus 5 is the common term. Now two terms are there, first term and second term, in which x plus 5 is the common. So taking x plus 5 as a common, x plus 5 as a common term, so remaining terms are x plus 4, x plus 4. डन है ना। ये आपको रफ में करना है, इनिशियल बेस पर रफ में करना है, उसके बाद तो आपको डायरेक्ट ओरल ही करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई स्क्वेयर प्लस 18x प्लस 65, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। फैक्टर्स ऑफ दिस 65 whose एडिशन इज है ना, whose एडिशन इज 18। फैक्टर्स ऑफ 65 whose एडिशन इज 18, तो होगा 13 5 जा 65 और 18x को रिप्लेस करेंगे 13x प्लस 5x, तो हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। सो इट्स अ वाई स्क्वेयर, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 18x एज ए 13x प्लस 5x प्लस 65. Now here consider the pair of first two terms and last two terms. ये वाई स्क्वायर के फॉर्म में है तो यहाँ पर वाई होगा ना, क्वेश्चन में आपने गलती की है। सो ये वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 65, तो यहाँ पर जो डिवीज़न होगा वो एक्स में होगा है ना, एक्स नहीं है यहाँ पर। 13y एंड 5y
ये भी y में होगा. So here y is common, so it's a y plus 13 plus 5y plus 65. So you can take 5 common, so it's a y plus 13. So here y plus 13 is common, y plus 13 is common. Remaining terms are y plus 5, y plus 5. Done. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अभी आपको सबको समझ में आ गया है. p square plus 14p plus 13. So again you have to factorize 13 ones are 13. So factor of 13 whose addition is 14. तो अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट होगा. क्या हो गया? 13 ones are 13. Very good. So this 14p can be splitted as 13p plus 1p plus 13. 13 ones are 13. 13 plus 1 14. So now this one is first group, this is second group. So from the first group we can take p as a common. So remaining terms are p plus 13. From the last two terms we can take 1 as a common. So it's a p plus 13. So here you can take this p plus 13 as a common. Remaining terms are p plus 1. सिंपल. देखो अभी तक यहाँ पर सब प्लस प्लस साइन थी, है ना. अभी यहाँ पर माइनस साइन आ गई. तो कैसे करना है? लॉजिक हमारा सेम रहेगा. सो हियर इट्स अ वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21. क्या लॉजिक था? मल्टीप्लाई दिस लास्ट टर्म विद द कोफिशिएंट ऑफ दिस वाई स्क्वायर. यहाँ पर तो 1 ही है, हर एक सम में 1 है. तो 21 × 21. नाउ then you have to consider the sign of this last term. Minus sign is there. So what you have to do? You have to find the factors of 21. ना factors of 21. यहाँ पर प्लस साइन थी तो हम एडिशन कंसिडर कर रहे थे. Now here minus sign is there. So what you have to do? Factors of 21 whose minus sign के लिए subtraction. So 21 factors of 21 whose subtraction is 4. है ना. 4 मतलब कोफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म. तो मिडल टर्म का स्प्लिटिंग करने के लिए क्या हम करेंगे? 21 के ऐसे फैक्टर फाइंड करेंगे जिसका सब्ट्रैक्शन है ना +4 आए. +4 है ना. तो बोलो बच्चों क्या होगा? सो फैक्टर्स ऑफ 21 whose subtraction is 4, है ना. आफ्टर doing too much practice of this type of sums you will easily say that it's a 7 3s are 21 and factors of 4 that is nothing but the 7y minus 3y. 7 minus 3 करेंगे तो 4 होगा. So here splitting of our middle term 4y is 7y minus 3y. Clear? So solution is y square, replacing this middle term, splitting the middle term as a 7y minus 3y. So plus 7y minus 3y minus 21. Done. Now again grouping first two terms, last two terms. From the first two terms we can take y as a common. So y square plus 7y, y is common. So remaining terms are y plus 7. Now from this last two term we can take minus 3, है ना. दोनों टर्म में माइनस है तो माइनस भी कॉमन आएगा और दोनों टर्म में 3 भी है. So minus 3 भी कॉमन आएगा. So minus 3 common. So if you are taking minus 3 common, remaining terms are plus y. Here minus 3 into 7, minus 3 चला गया तो plus 7. Sign of bracket will be changed, है ना. minus 3y minus 20 आ गया. So here again y plus 7 is common term and remaining term is y minus 3. Done. So this is how you can perform. This is how you can perform the factorization by splitting them when last term has minus sign. Again, last term has minus sign as well as middle term has also minus sign. तो इसको कैसे करेंगे? y square minus 2y minus 15. तो इसमें देखो सेम लॉजिक.
कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करो 15 आएगा. नाउ यू हैव टू स्प्लिट दिस मिडिल टर्म -2y. हाउ? फैक्टर्स ऑफ दिस 15 whose subtraction is -2. Subtraction is -2. So which are the factors of 15? So here you can write factors of 15 are 5 3s are 15, 5 3s are 15 और 5 और 3 के बीच में डिफरेंस भी देखो 2 आएगा, लेकिन हमें लाना है -2. तो -2 कैसे आएगा? -2y. तो लार्जेस्ट फैक्टर है उसको माइनस साइन देंगे. सो -5 + 3 है ना, -5 + 3 करेंगे ना तो -2y होगा. सो -5y + 3y. So we are splitting this -2y as a -5y + 3y. Done. Splitting the middle term. Factors of 15 whose subtraction is 2. So 5 3s are 15 and we require -2. So -2 is nothing but the -5 + 3. लार्जेस्ट नंबर होगी उसकी साइन आएगी. तो जो लार्जेस्ट फैक्टर है उसको आपको माइनस फैक्टर कंसिडर करना है, दूसरा वाला प्लस कंसिडर करो. तो प्लस माइनस माइनस -5 + 3 = -2. So splitting the middle term -2y as -5y + 3y. So it's a y square minus 5y + 3y -15. First group, second group. Here we can take this y as a common. So remaining terms are y minus y. Now here we can take 3 common, 3y -15. So 3 is common factor. So taking 3 common, so it's a y minus y. Again y minus y is common. So this is equal to y minus y, y plus 3. So this is how you can perform the factorization of this question number 6. Done. Now question number 7. So here first you have to arrange these terms in standard form. So it will be x square plus 11x plus 18. Now factors of 18 whose addition is 11. बोलो प्लस साइन है. So factors of 18 whose addition is 11. So here you can write this 18 as a 9 2s are 18. So we can convert this 11x as a 9 plus 2. So splitting the middle term 11x as a 9x plus 2x. Done. So here this one is x square. Splitting this 11x को कन्वर्ट करेंगे 9x plus 2x में से. So x square plus 9x plus 2x plus 18. Done. Then pair of two terms. First term taking x common, so we are getting x plus 9. From the second pair we can take 2 common, so it's a x plus 9. So this is equal to x plus 9, x plus 2. Done. Now simple x square minus 10x plus 21. So here you have to find the factors of 21 whose addition is 10 but 10 is minus 10. तो पहले तो आपको 21 के फैक्टर निकालने हैं जिसका एडिशन 10 हो. So which are the factors of 21? Factors of 21 whose addition is 10. So we can say that it's a 7 3s are 21. Factors of 21 whose addition is 10. So 21 को factorize कर सकते हैं. 21 is nothing but the 7 3s are 21. So factors of 21 are 7 and 3 whose addition is 10. But here sign is minus 10x. So minus 10x के लिए क्या करना पड़ेगा? We have to put both factor as a minus. Minus 3 minus 7. So minus minus addition होगा और साइन भी माइनस आएगी. So minus 10x can be replaced with minus 7x minus 3x. Done. That is the splitting of middle term. We are splitting this middle term minus 10x as a minus 7x minus 3x. Clear, students? So this is equal to x square. This one is minus 7x
minus 3x plus 21. This is equal to first and last group. Here x is common, it's x minus 7. Here minus 3 is common, it's x minus 7. So here we can take this x minus 7 as a common. The remaining terms are x minus 3. Done. Now question number 9. Again we have to rearrange these terms. So this is equal to x square minus 17x minus 60. Now here factors of 60 whose subtraction is 17. तो क्या होगा? Factors of 60 whose subtraction is 17. तो ऐसा होगा 60. तो 23 जा 60 कर सकते हैं. 23 जा 60. So this is the factors of 60. और subtraction करो. 20 minus 3 17. Minus 17 लाना है. So for minus 17 we can take minus 20 plus 3. And splitting this middle term minus 17 as a minus 20 plus 3. So our factorization is x square minus 20x plus 3x minus 60. This is equal to first group, last group. Here we can take x common, so it's x minus 20. Taking this 3 common, x minus 20. So this is equal to x minus 20 x plus 3. Done. So this is how you can solve your question number 9. Now for this question number 10. Factors of 77 whose subtraction is 4. Factors of 77 whose subtraction is 4. क्या होगा? 77 is equal to 11 7 से 77 होगा. So minus 4 is nothing but the minus 11 plus 7. So splitting this middle term minus 4x as a factors of 77. So 11 7 से 77. Minus 11 plus 7, that will be equal to minus 4. So this is equal to x square minus 11x plus 7x minus 77. This is equal to first group, second group. Here we can take this x common. It's x minus 11. Here we can take 7 common. It's x minus 11. So this is equal to x minus 11 x plus 7. Y square plus 7y plus 12 है ना. फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा? 4 3 are 12. 4 3 are 12. उस एडिशन इज 7. सो 4 plus 3 is 7. तो ये आसानी से हो जाएगा. सो दिस वन इज y square plus 3y plus 4y plus 12. This is equal to first group and last group. First group we can take y common, so it's a y plus 3. From second pair we can take 4 as a common, so it's a y plus 3. So this is equal to y plus 3 y plus 4. Done. Last, p square, it's a p square minus 16p minus 80. Factors of 80 whose subtraction is 60. So we can write this 80 as a 24 is 80. So minus 16 is nothing but the minus 20 plus 4. So splitting the middle term minus 16p as a minus 16p को कैसे स्प्लिट करेंगे? minus 20 plus 4 से, because factors of 80 फाइंड करना है. Factors of 80 are 20 into 4. Done. So this one is p square minus 20p plus 4p minus 80. Here first group and last group,
first group and last group. Here from the first group we can take p as a common, so it's a p minus 20. From last two terms we can take 4 as a common, so it's a p minus 20. So this is equal to p minus 20 common, p plus 4. Done. So this is how you can perform the factorization by splitting the middle term. Do more and more practice and try to solve more sums. Clear students? Pause the video and note it down.